Hi, this is Kutya Kripya Samachar. This is Bulla and Chirag signing in, and we're going to talk about the most popular person from Gujarat. And we are not talking about Narendra Modi. Seriously? Who is it then? Hardik Patel. छोरा पटेल नो झुके गया था पढ़ने. Apparently, this Patel could not go to UK. But that is not the question. Who is Hardik Patel? આને શું જોયો છે? जो ओबीसी उसमें हमारा दाखिला कराना चाहते हैं और अलग से कोई हम प्रतिशत नहीं मांग रहे और ये सरकार के हाथों में. After hearing this, the government must have gone like Jeetu from TVF Pictures. इसको रिजर्वेशन दूं मैं? साला पहले मैं दलितों को रिजर्वेशन दूं, फिर मैं माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दूं, फिर मैं गुज्जरों को रिजर्वेशन दूं. 22 साल का है यार ये एक बहन का पटेल. And this is what the Mandal Commission thinks about this. 12 मीटर उसने तय करके उन्होंने कह दिया कि अब तो डोर क्लोज हो चुका है, अब खुलेगा उसी के लिए जो बहुत डिप्रेस क्लास है. तो अब ऐसी हालत में ऐसे कम्युनिटी जिसके बारे में आम धारणा है कि वो कम्युनिटी अपलिफ्ट है, उसके लिए डोर खोलना बहुत मुश्किल है लगता है मुझे. And if they don't get what they want? नहीं तो बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट और पुलिस की रहेगी. जिसके ऊपर जो हमला करे वहीं पे AK-47 तनातन गोली मारे, है ना? हाँ, मार देना चाहिए. अगर But he is protesting peacefully. Only 10 people killed, many more injured, and only a few houses, shops and businesses vandalized by the police and Patels. के पास 5 बजे तक की परमिशन थी, फिर भी आप लोग वहीं पे बैठे रहे. आतंकवादी को परमिशन देते हो गुजरात इंडिया हिंदुस्तान में हमला करने की, नहीं दे तो फिर भी वो कर जाते हैं. फिर भी पूरे देश देखता है 180 लोगों को मार देता है वो ताज में, फिर भी हम उसे 4 साल तक पैसों से उसे अच्छी तरह के देखभाल करते हैं. जब जरूरत पड़ने पर उसे बिरयानी खिलाते, अमिताभ की पिक्चर दिखाते हैं, तो वो करे वो सही है. देश का युवा अगर रोड पर आकर उसका हक मांग ले तो वो सही नहीं है. Just so you know, Mr. Patel, that guy was hanged. वो भी सुबह 5 बजे. भाई सोने भी नहीं दिया यार उसको. अबे वो मेमन था सुबह 7:30 बजे. The real question is, are seats worth the disturbance? Shutting down businesses worth crores of rupees, and most importantly, the lives of the people who died. Bro, let me tell you the whole fucking game. The political conspiracy behind it. क्या उसको सीएम बनना है? नहीं बे, पार्थिव पटेल wants to be in the team. रिद्धिमान साहा तो गांडो छे. थक गया यार. चल कचौरी खाते हैं. नहीं यार. फीफा? Okay, this is so much more fun than asking for reservation. No shit, bro. Oh yeah! Loser! भाड़ में काम. The next topic of the day is the FTI Pune controversy. Rona, mummy, can't you see I'm working here? So damn tough to be a YouTuber now, man. I know. Can you please cue the magical sequence for us? Certainly. So once upon a time in Pune, there was a magical land called the Film and Television Institute of India. Everybody in this land was like Amir Khan in Rang De Basanti. Nobody wanted to leave the college. And then he happened. अविनाश. मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया वहाँ कि मैंने 700 सीरियल्स किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में रह के 34 ईयर्स कैरियर में, और मैंने करीब 150 फिल्में की. And he has 4 minions, namely Rahul Solapurkar, Pranjal Saikia, Narendra Pathak, and Anaga Ghaisas. And here's what she does for a living. Well, Pranjal Saikia did a few movies, namely Hello, Tin Khan, and Coco. And Rahul Solapurkar, I guarantee you this, got into the film society with the most evil of plans.
and absolutely no body of work could be found for the 4th million. What else do you expect from a former ABVP leader? And this is the most interesting part. Not just their body of work, even their quotes are awesome. Here's what Anaga Gaisa said in a recent interview. We are Indians and we work for the nation. If there is any anti-national work going on, तुमको सबक सिखाना जरूरी है. She will probably show the culprits her shitty documentaries. So let's come back to Gajju and explain to you why people think he's not suitable for the job that he has been offered. As a chairman of the thing, we need a much more qualified person. लेकिन राइट विंग में भी इनसे तो अधिक समझदार बंदे ही हैं. हाँ, उनको हटा के ये बंदा जो है मतलब आपके खोज खाज के निकाला है, कौन बंदा है यार? It's not the body of work, it's the knowledge that is important. ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. मुझे आज 44 साल हो गए, 44 years, yet I don't think I have enough knowledge. That makes sense. So let's see Gajju's knowledge of cinema. जो फिल्म हिट हो जाती है वो A grade होती है. आप सुनिए, what in your view is good cinema? What in your view is good cinema, Mr. Chauhan? Don't ask me questions. I'm not here for examination. No, but what is a good cinema? What is good cinema? What is good cinema? Mr. Chauhan, what is good cinema? No, I'm asking you. I am asking the chairman of FTI on the program. आप कहिए what is good cinema? नहीं आप पूछ सकते हैं कुछ भी. Good cinema. What is good cinema? I'm not here to give an examination. Sure, you are not here for an examination, but I'm asking you a question. No, I'm not answering. What is good cinema? I'm not answering. What is good cinema? No, I'm not answering this. अच्छी सिनेमा क्या होती है? मैं इसको आंसर नहीं करूँगा. कैसे आप आंसर नहीं? आप FTI फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं. मैं आपको पूछ रहा हूँ, सारा देश देख रहा है. हाँ. अच्छी सिनेमा क्या होती है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूं. Okay, there's just one more reason. Let us suppose that the people were capable. And you still got 250 people, entire student body, who said we don't want them. That in itself is questionable. I would say, even if the people are technically capable, from a democratic perspective, if the entire student body says we don't want them, that in itself is a huge issue. Now you know that when Rahul Gandhi starts making more sense than most people, there is definitely a fuck up. Of a substantial amount. Now the students have been on a strike since the past 3 months and they threaten to go into an indefinite fast if their demands are not met soon enough. So, if you want to watch awesome movies like Himmatwala, Kunda, Kunde, let Yudhishthir be. हम लोग हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब नहीं किया, विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक. फास्ट एंड टू डेथ.